Good afternoon, students. Welcome back once again to the mathematics class. In the last lecture, we have solved it is exercise 13.2. It is conditional probability, dependent events, all of this, which examples included 13.2. But now, in today's concept, that is nothing but Bayes theorem, right? So before going to start the Bayes theorem, let us see what exactly a Bayes theorem. By an example, we can understand what is exactly the Bayes theorem. So let's see. Consider that there are two bags, right? What we have? There are two bags, bag 1 and bag 2, right? Two bags 1 and 2. Bag 1 contains two white ball, three red balls, and bag 2 contains four white balls and five red balls, right? Two bags we have. Bag 1 contains two white, three red balls, and four white and five red balls in the bag 2. So one ball is drawn at a random from the bag. One ball we have to pick randomly from one of the bag, right? Either it may be one or two. So we can find the probability of selecting any of the bag. That is what, if two bags are there, the probability what we get here, 1 by 2 will be the probability, or probability of drawing a ball from particular ball. Say for example, if we are drawing white ball, drawing a ball from particular color, say white ball we are picking from a particular bag, say 1. What we are doing here, we are white ball selecting or picking from the bag 1, first bag. In other words, we can say we can find the probability that the ball drawn is a particular color. Already a ball drawn is what? It is a particular color if we are given the bag from which the ball is drawn. We are telling here the bag, either it is first bag or second bag, what will be the color of that particular ball. We have to find the probability, right? So in particular bag, say B1 or B2, if the color of a ball is drawn given, here we have to find the reverse probability of bag 2 to be selected when the event occurred. After it is known as the famous mathematician, that is nothing but John Bayes solved the problems. By him is known as Bayes theorem, which was published in 1763. Before stating the proving the Bayes theorem, let us first take up the definitions and some preliminary results based on Bayes theorem. तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक क्या है बेस थ्योरम का? अभी दो बैग्स दिए सो है आपको, बैग 1 बैग 2 दिए सो है। आपको क्या है, एक बॉल निकालना है, उसके अंदर व्हाइट बॉल अब पिकअप कर रहे बोल के समझो। इफ यू आर ड्राइंग व्हाइट बॉल, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द white ball, picking a white ball, either it may be first bag or second bag। तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? अभी क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी इफ यू आर सेलेक्टिंग अ बॉल, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग, आइदर इट मे बी, वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको एक व्हाइट बॉल पिक करो बोल रहे दो बैगों में से, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग क्या है बोल के भी पूछ सकते हैं, राइट? उसे क्या बोलते हैं यूजुअली, यहाँ पे इवेंट्स बोल के लेते हैं। यहाँ पे इसको दिस आर व्हाट, इवेंट्स बोल के लेते हैं इसको। इवेंट E1 एंड E2, दिस टू आर द इवेंट्स, राइट? सो अभी यूजुअली देखो हमारे पास क्या है, दो बैग्स है, बैग 1 एंड बैग 2। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
a white ball बोल के बोल रहे हैं from these two bags, then what will be the probability of choosing a white ball from these two bags? So simply how you can write, let us consider here A is white ball, right? ये क्या है, यहाँ पे व्हाइट बॉल है. तो अभी यूजुअली कैसे फाइंड करते हैं इसके प्रोबेबिलिटी? अभी ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास यहाँ पे? ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स है. 2 ऑब्जेक्ट में कैसे सेलेक्ट करेंगे अभी? अभी क्या है, फर्स्ट P ऑफ A इज नथिंग बट व्हाट, व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, राइट? सो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोल के ले लेते हैं यहाँ पे. P ऑफ E1 पहले बैक सेट करेंगे, राइट? उसके बाद बॉल कौन सा है, P ऑफ A बाई E1 इट इज, राइट? कैसे लिख सकते हैं हम इसे, A बाई E1 इट इज. P of A which is equals to P of E1 into A by E1 प्लस कैसे लिख सकते हैं हम इसे, सेकेंड बैग के लिए, सेकेंड बैग में से व्हाइट बॉल हमें पिक करना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ A by E2, राइट? सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे व्हाइट बॉल का, ए हाफ प्रोबेबिलिटी. A by E1 है, राइट? टोटल कितने यहाँ पे वैल्यूज, A by E1 मीन्स A इज अ व्हाइट बॉल, दैट इज 2/3 प्लस सेकेंड बैग यहाँ पे भी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है सेकेंड बैग में से व्हाइट बॉल पिक करना बोले तो. अगेन व्हाट वी हैव हियर, 4/5. तो ये क्या है हमारा, P ऑफ A वैल्यू है, राइट? ऑलरेडी आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए है बोल के समझो, इट इज व्हाट इट इज गिवन, इवेंट ए इज गिवन. फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें, राइट? दैट इज P ऑफ E by A1 and that will be what, white ball. तो P of A1 by E क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, डिनोमिनेटर में क्या है, यूजुअली P of A बोल के ले लेते हैं, न्यूमरेटर में क्या आएगा, E1 इंटरसेक्शन A आएगा. क्या है वैल्यू यहाँ पे, गिवन वैल्यू P of A, डिनोमिनेटर में कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आप देखेंगे, राइट? द वैल्यू ऑफ P of A, E1 इंटरसेक्शन A है. फर्स्ट बैग में से क्या निकल रहे हैं, व्हाइट बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल है लॉजिक यहाँ पे. तो इसे हम कैसे लिखते हैं अभी, फर्स्ट बैग P of E1 into P of A by E1, right? The intersection can be written as P of E1, it is A by E1. Usually conditional probability पता है आपको क्या है, conditional probability P of A by E1 बोल के समझो, तो क्या लिखते हैं हम उसे, A intersection E1 upon E1 will be, or what, conditional probability, it is P of E1, right? So similarly A intersection E1 को कैसे लिखते हैं हम, P of A intersection E1 which is equals to P of E1 into P of A by E1, right? तो सिमिलरली हम क्या लिखे यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए, P of E1 upon P of A by E1, got it? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पे, दैट इज P of E1 by A. सो फाइनली फेवरेबल इवेंट डिनोमिनेटर बाय टोटल इवेंट्स. तो क्या होगा फॉर्मूला अभी यहाँ पे, P of E1 P of A by E1 होल डिवाइड बाय टोटल इवेंट, दो बैग से P of E1 P of A by E1 प्लस P of A2
P of A by E2. एक है हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, राइट? हाउ कैन वी राइट इट एज बेस थ्योरम फॉर्मूला? ये फॉर्म में लिखेंगे मेरे P of EI by A. इन जनरल कैसे लिखेंगे हम इसको? ये क्या है, टू इवेंट्स के हैं, टू ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ दो बैग्स है ना, इवेंट E1 एंड इवेंट E2, बल्कि लिए थे वहां पे क्या लिया P of E1 अपॉन P of A by E1 होल डिवाइड बाई P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए तो क्या होगा आपका P of E1 का वैल्यू क्या है? Yes, it is 1 by 2 into A by E1. A by E1 is 2 by 3 whole divided by 1 by 2, 2 by 3 plus 1 by 2 into 4 by 5, right? White ball सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है फ्रॉम द टू बॉल्स? ये क्या हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो बिफोर गोइंग टू solve the Bayes theorem, let's see some basic definitions based on it. Simply क्या है यहाँ पे Bayes theorem is nothing but to find the reverse of probability. क्या बोल सकते हैं आप इसे? सिंपल क्या है, दो बैग में से आपको क्या करना है, एक बॉल निकलना है. There are two bags as usual I said. First bag contains 2 white and 3 red balls and second bag contains, see, क्या यहाँ पे दो बैग्स है ऑलरेडी हमने बताया और एक बार मैं रिपीट करूंगा. कंसिडरिंग देयर आर टू बैग्स 1 एंड 2, इट इज E1 एंड E2 बोल के लेते दो बैग्स को. फर्स्ट बैग में क्या है, बैग 1 कंटेन्स 2 white and 3 red balls and bag 2 contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at a random from one of the bags. हमारे को एक बॉल पिक करना है रैंडमली, वो कौन सा बैग से नहीं मालूम, वो क्या है व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर व्हाइट कलर का बॉल पिक कर रहे हैं, वो कौन सा बैग से है नहीं पता हमें. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, राइट? सो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बैग और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल ऑफ अ पर्टिकुलर कलर. हम इधर बैग का प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं और पर्टिकुलर कलर बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, राइट? From a particular bag. In other words, we can say it as we can find the probability that the ball drawn is of particular color. Already हमारे को बॉल पता है कौन सा कलर का है बोल के, पर्टिकुलर कलर है वो व्हाइट कलर है बोल के ऑलरेडी हमने बता दिया है. If we are given the bag from which the ball is drawn, probability that the ball drawn is of particular color if we are given the bag from which the ball is drawn. अभी बैग बता दे रहे, ये बैग में से निकाल रहे बोल के ऑलरेडी हम बता दिए यहाँ पे बैग E1 में से निकाल रहे बोल के, बैग E1 में से व्हाइट बॉल निकाल रहे बोल के बता दे रहे. इट इज गिवन द बॉल इज drawn of particular color if we are given the bag from which the ball is drawn, but we find the probability that the ball is drawn from a particular bag. Say bag 2, हम ये भी बोल सकते हैं, भी हम E1 बोल रहे हैं, हम E2 भी बोल सकते हैं, ये बैग में से भी निकाल सकते हैं, व्हाइट बॉल यहाँ पे भी है, राइट? तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 में निकाले बोले तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 पे निकाले तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है. इफ द कलर ऑफ अ बॉल ड्रॉन इज गिवन, अभी बॉल का कलर दिए सो है व्हाइट बोल के यहाँ पे भी, अभी वो E2 में से निकाल रहे बॉल तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बोल के भी पूछ सकते, राइट? सो हियर we have to find the reverse probability of bag 2 to be selected when an event occurred after a ball is selected, right? सिंपल लॉजिक है. तो उससे पहले अभी हम क्या देखेंगे, ये तो आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट वी कैन सी पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस. लेट्स सी व्हाट इज पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस. Partition of sample space, right?
See, usually partition means segregation. Usually what you can say, sets देखे होंगे आप, sets में you have different types of sets. Similarly, what we have here, events, that is partition of a sample space. For example, let's see the partition of a sample space. A set, definition of partition of a set, let's see. A set of events, e1, e2, so on up to en, is said to represent a partition, of a sample space. Yes, if there are three conditions. First one is ei intersection ej, which is equals to 5, where I is not equals to j and the value of I is set of natural numbers, right? Second one, e1 union e2, so on up to union en equals to yes. And third one, the probability of event ei is greater than 0 for all I is again set of natural numbers. So in other words, we can say a partition of a sample space is nothing but the events e1, e2, e3, so on en represent a partition of a sample space. Yes, sample space. Yes, if they are pairwise disjoint. First condition, it is pairwise disjoint. And exhaustive, second one is what? Pairwise disjoint, or you can say mutually exclusive, right? Mutually exclusive. And second one is, it is mutually exhaustive. Exhaustive in the sense e1 union, e2 union, so on en, if you add together all the events, then you will get the sample space. Yes, that is nothing but exhaustive. And finally third one, and have a non-zero probability. Non-zero probability, right? If it satisfies these three conditions, then we can say it is a partition of a sample space. First condition is ei intersection ej, which is equals to 5, where I is not equals to j. Second one, e1 union e2 so on up to en, which is equals to sample space yes. And finally last one, provided p of ei is greater than 0 for all I is 1 to n, that is set of natural numbers, where which is nothing but a non-zero probability, right? There must be some events. So next we will see theorem of total probability. First one is partition of sample space, where if an event is represent a partition of a sample space, yes, then it satisfies these three conditions, that is pairwise disjoint, exhaustive, and non-zero probability. Next, theorem of total probability. Next, theorem of total probability. Let's see, already we have a partition of a sample space. If it satisfies properties of sample space, then we move for theorem on total probability. So let's see, let e1 e2 let e1 e2 so on up to en be a partition of a sample space. Yes, be a partition of sample space. Yes, and suppose that each of the event e1 e2 so on up to en has non-zero probability of occurrence. Let
A be any event associated with yes, then what we can write it here? P of A, which is equals to P of E1, P of A by E1 plus P of E2, P of A by E2 plus so on up to P of En, P of A by En. ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था आपको, दो बैग्स है उसमें, सिर्फ दो बैग्स के बारे में बताया था हमें वहां पे. तो यहाँ पे क्या है, n इवेंट्स है, राइट. what we are taking here, e1 e2 so on up to en be a partition of a sample space. Then what we have, the formula for this one, it is p of e1 upon a by e1 plus p of e2 upon into p of a by e2 plus so on up to p of en into p of a by en. So it can be rewritten as p of a, which is equals to, it is summation j equals to 1 to n, j equals to 1 to n, p of ej into p of a by ej, right. Can we write the summation like this? Yes. तो क्या है यूजुअली यहाँ पे, सी अब एक रेक्टेंगल है हमारे पास, फिर अगेन हम सेट्स को चले गए यहाँ पे, सी सी ऑलरेडी वी हैव व्हाट, e1 e2 so on, first event, second event, it is third event, it is so on dash dash event en बोल के है, राइट. वहां पे हम क्या ले रहे, a is an what we are taking here, the a be any event, एक इवेंट ले रहे, कौन से भी एक इवेंट है, ए टाइप में इवेंट हो, राइट. the event is like this, right. This event is taken as a. so इसका प्रूफ देखो अभी क्या है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. so given that, let's see proof. Proof is not necessary, just if you know the formula is enough. For your knowledge purpose we are proving this one. So given that e1 e2 so on en is a partition of the sample space, right. Sample space, yes. Therefore yes equals to, we can write it as e1 union e2 union so on up to union en, right. So we can write it like this. And ei intersection ej, which is equals to phi, by the partition of a sample space where I is not equals to j and I equals to 1 to so on up to n. So now we know that for any event a, for any event a equals to, can we write like this, a intersection s, because event a is what, the common element from the sample space, a intersection s. So a as it is intersection of s can be written as e1 union e2 union so on up to en, right. So by using distributive property here we can write it as a intersection e1 union a intersection e2 union so on a intersection en, right. So here a intersection e1 a intersection e2 a intersection e3, these are all what, events. And we know that a intersection ei and a intersection ej are respectively the subset of ei intersection ej. So now here we can write it as p of a, which is equals to, that is applying probability on both sides, that is p of a equals to p of a intersection e1 union a intersection e2 union
A intersection En, right? So now here, if we take separately P of A intersection E1 plus, when we write like this, P of A intersection E1, P of A intersection E1, that is P of A intersection E1, which can be written as P of A plus P of P minus P of A union B, that is A intersection B can be written as P of A plus P of B minus P of A union B. If it is mutually exclusive and exhaustive, then this term vanishes. Then we can write P of A intersection E1 union of P of A intersection E2 union of A intersection En. We can write it as P of A intersection E1 plus, instead of union we are taking A, because A intersection B can be written as P of A plus P of B. So here we can write it as P of A by A intersection E1 plus, it is nothing but plus of P of A intersection E2 plus so on up to P of A intersection En. Now, by multiplication rule of probability, we can write it as by multiplication rule of probability, we can write P of A intersection EI. In general, we are taking P of A intersection EI, which is equals to P of EI into P of A by EI, as P of EI, which is not equals to 0 for all I equals to 1, 2, 3, so on up to n it is. So which can be written as, therefore P of A equals to P of E1 P of A by E1 A intersection. In this form we are expanding like this, plus of this term is over here, A intersection E1, this term we can write it as, similarly P of E2 P of A by E2 plus so on up to P of En into P of A by En. So finally we can write it as P of A, which is equals to summation j equals to 1 to n P of Ej, where P of A by Ej, right? So finally the Bayes theorem we can write it as, thus the probability that we shall write the Bayes theorem if E1 E2 so on En are non-empty events which constitute a partition of a sample space. Yes, partition means again which satisfy three conditions. Partition of sample space, yes, that is pairwise disjoint, mutually exhaustive and non-zero probability, right? That is nothing but partition of a sample space, that is E1 E2 so on En are pairwise disjoint and they are exhaustive and the non-zero probability. Then we can write it as P of EI upon A. A is given here, EI by A, which can be written as P of EI P of A by EI divided by summation j equals to 1 to n P of EJ
into P of Ej into P of A upon Ej for any I equals to 1 2 3 so on up to n, that is nothing but set of natural numbers. So simply we can write it as, how we can find it? Simply let's see, proof for this one also, by formula of conditional probability. Already you know the conditional probability. Conditional probability we have, suppose ei by a is given, we have to find the probability of ei, right, which can be written as, that is a intersection of ei upon the given a can be written in the denominator, that is p of a. So here p of a intersection ei can be written as p of ei, it is p of a by ei whole divided by p of a, that is nothing but by multiplication rule of probability, right? Again, which can be written as, which is equals to p of ei a by ei whole divided by summation j equals to 1 to n p of ej, it is p of a by ej, which is nothing but Bayes theorem in the specific form, that is p of ei upon a. A is given, we have to find the probability of even. So let's see here the events, what we can say, the terminology is generally used in a Bayes theorem is applied. So here the events terminologies, let's see. The event E1, E2, so on up to En are called hypothesis, right? What the events are called? These are the terminologies in generally used when Bayes theorem is applied in particular problem. E1, E2, En are called what? Hypothesis. And the probability P of Ei is called priori probability. Prior probability of hypothesis Ei, of hypothesis Ei. And next third one, the conditional probability P of Ei by A is called posterior probability. This one called hypothesis, this is called prior probability, that is P of Ei, whereas P of Ei by A is called posterior probability. These three terminologies you have to remember while solving the Bayes theorem. So Bayes theorem is also called the formula for probability of what? The cause. Usually it is, in other words, the probability is, Bayes theorem is also called as formula for the probability of causes. So the Bayes theorem has its application in varieties of situations, few of which are illustrated in the following examples, right? So let's see one example based on Bayes theorem. After solving
This example we will go for exercise. Example, bag 1 contains bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red, 6 black balls. One ball is drawn at a random. One ball is drawn at random from one of the bag. And it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. So simple है. First beginning of this lecture series I have told you already this kind of a problem only. आपके पास क्या है? 2 बैग है. Let's see solution for this one. Again you have 2 bags, that is bag 1 and bag 2. Bag 1 contains 3 red balls and 4 black balls, and bag 2 contains 5 red balls and 6 black balls. One ball is drawn at a random from one of the bag. Randomly क्या कर रहे हैं? एक बॉल चूज कर रहे हैं. वो कौन सा बैग है नहीं पता, randomly चूज कर रहे हैं one of the bag, and it is found that, अभी ये बताए सो है, it is found that the ball is, and it is found to be a red. One ball is drawn at a random from one of the bag and it is found to be red. एक बॉल निकाले रैंडमली, वो कौन सा बॉल है? रेड बॉल है. वो कौन सा बैग में से निकाले नहीं पता, एक बॉल निकाले वो रेड बॉल मिला, राइट. तो अभी उन्होंने क्या पूछ रहे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. वो बैग 2 में से निकाले सो है, बोल के प्रोबेबिलिटी क्या है उसका? एक बॉल निकाल रहे 2 बैग में से, वो कौन सा बैग में का है आपको नहीं पता, एक रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो कौन सा बैग है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बोल के बता रहे हो. अभी रेडिश है बोल के रेड का प्रोबेबिलिटी, रेड बैग का सेकंड बैग का प्रोबेबिलिटी क्या है बोल के पूछ रहे हो. रैंडमली क्या है? वन बॉल पिक कर रहे हैं, वो रेडिश है बोल के पता है, इट इज फाउंड टू बी रेड. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड बी अ बैग 2. वो बैग 2 से निकाले बोल के उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 बोल के बता रहे. सो लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर दिस वन. लेट E1 be the event of choosing a bag 1. इसे क्या ले रहे? इवेंट E1 ले रहे, is event 2. So let's see. Let E1 be the event of choosing bag 1 and E2 be the event of choosing bag 2, right? So let A be the event. Let A be event of drawing a red ball. ऑलरेडी ये गिवन है, रेड बॉल निकाल रहे बोल के, और कौन सा सेकंड बैग का प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल में से निकाले बोल के इसका प्रोबेबिलिटी क्या है बोल के पूछ रहे, राइट. सो लेट्स सी.
in general usually P of even फर्स्ट बैग में से मिला हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दो बैग से मीन्स अब फर्स्ट बैग में से मिला हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 होगा, सेकंड बैग से भी मिला हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट इज आल्सो 1/2 ओनली। दो बैग में से एक बैग में मिल रहा हो तो क्या होता है उसका फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट, राइट, it is 1/2. Next also we can write P of A by even, drawing a red ball from bag 1, that is probability of P of A by even क्या है, drawing a red ball from the bag 1, drawing red ball from bag 1 which is equals to how much, रेड कितने हैं फर्स्ट बैग में 3 रेड्स है, टोटल कितने हैं 4 + 3 7 बॉल्स, राइट, ये फर्स्ट बैग के लिए हो गया। नेक्स्ट P of A by E2 सेकेंड बैग के लिए, what will the probability of drawing a red ball from bag 2, it is P of drawing a red ball from bag 2 which is nothing but 5/11, 5 red balls there, total balls in a bag 2 is 11. So now the probability of drawing क्या फाइंड करना है हमें, now the probability of drawing a ball from bag 2 being given that that it is red is that is P of E2 by A. A is nothing but what, it is a red ball है बोल के गिवन है और बैग 2 है बोल के फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड करना है, तो रिवर्स यहाँ पे रिवर्स हो गया, देखो हमारे को A by E1 पता है, A by E2 पता है, P of E1 P of E2 भी पता है, राइट, अब हमें क्या करना है, इट इज गिवन बॉल कौन सा है, रेड बॉल है बोल के बताए सो है, और प्रोबेबिलिटी क्या है E2 सेकंड बैग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, दैट इज P of E2 by A. So by using Bayes theorem we have P of E2 upon A can be written as P of E2 into P of E2 A by E2 whole divided by, दो है यहाँ पे इवेंट्स, it is P of E1 P of A by E1 plus P of E2 P of A by E2, so which is equals to what we get here 1/2 5/11 divided by 1/2 3/7 plus 1/2 5/11 which is equals to what we get 35/68 is the probability of drawing a red ball from a bag 2, that is 35/68 is the required answer. So which is nothing but our Bayes theorem, right? So now with this we'll conclude our today's lecture. The next lecture we will solve the exercise 13.3. So till then take care, stay at home, stay safe. Thank you.